सो हेलो एवरीवन, वेलकम द न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 4 को कवर करेगा। स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। स्टेट का एग्ज़ाम जो है नवंबर में स्टार्ट होने वाला है और ये जो है चैप्टर 4 का एनसीईआरटी निचोड़ का जो सीरीज़ चल रहा था, ये वाला, इसका आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 4 का A to Z क्वेश्चन हमने कवर किया है इस निचोड़ के पीडीएफ में। एंड साथ में मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियो पे पहली बार हो तो ये सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टेट के पर्सपेक्टिव से। एंड साथ में साथ बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये सारे वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी निचोड़ की तरफ। ओके, एंड हम जो है सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वीडियो आप ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हो और ये वीडियो आप देख भी सकते हो। हम थोड़ा स्पीड को फास्ट रखेंगे क्योंकि सिलेबस जो है बहुत जल्दी कवर करना है, टाइम बहुत कम बचे हैं। और हाँ, ये पीडीएफ पाने के लिए सिर्फ 10 रुपीज़ आप हमें टेलीग्राम के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर आप हमें इस वीडियो में आप हमें थैंक यू करके, लाइक थैंक यू बटन प्रेस करके उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ओके, सुपर कमेंट करके आप यहाँ पे, या फिर लाइव चैट करके आप यहाँ पे वो कर सकते हो हमें, लाइक सुपर चैट करके आप हमें यहाँ पे ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, हम जस्ट आप स्क्रीनशॉट भेजना है टेलीग्राम पे एंड हम आपको ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ फॉरवर्ड किया, जैसे ये हो गया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हो। ओके, तो चलते हैं एंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस इज अ डैश प्रोसेस, is a systematic process. Okay, the first step in problem solving is, the first step इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रॉब्लम एनालिसिस। तो देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से चैप्टर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके, तो मैंने A to Z क्वेश्चंस जितने इस चैप्टर से आ सकते थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सारे वीडियोज़ हैं, सारे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। ओके, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी तो आपको पता है स्टेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। ओके, और ये पीडीएफ को पढ़ लेना है एक बार। ओके, विच स्टेप इन्वॉल्व्स चेकिंग इफ द प्रोग्राम गिव्स करेक्ट आउटपुट। ओके, टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स। ओके, द लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ओके, तो आफ्टर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, उसके बाद जो है आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आंसर ये दिया हुआ। विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप ऑफ problem solving, pseudocode elimination is not the step of problem solving. Okay, the process of expressing a solution in a stepwise manner is called algorithm design। ये इसका आंसर algorithm design हो जाएगा। A good solution must be efficient, a good solution must be efficient होना ज़रूरी है। The output of problem analysis is understand the input and output। Okay, which of this is performed before coding, which of this is performed before algorithm design, जो है कोडिंग से पहले किया जाता है। एंड algorithm is a sequence of वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम, एम्बिग्यूटी जो है इसका आंसर नहीं है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर, आफ्टर फाइनाइट स्टेप के बाद जो ये लाइक टर्मिनेट हो जाता है। ओके, the GCD of two number can be found using, the GCD of two number can be found using Euclid algorithm। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ पे आपको लाइक पढ़ना भी पड़ सकता है, तो इसका आंसर यूक्लिड एल्गोरिथम होगा आंसर। ओके, an algorithm should be expressed in a dash manner and precise and unambiguous manner में इसका आंसर हो जाएगा। ओके, which of this is the input for an algorithm, input for an algorithm का आंसर क्या हो जाएगा, डेटा वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। output of an algorithm should be, an output of an algorithm should be expected result। Okay, expected result, which of this is a property of good algorithm,
क्लियर एंड इफेक्टिव प्रॉपर्टीज का होना चाहिए एल्गोरिथम का। Algorithm of LCM can be derived from algorithm of GCD. Okay, GCD. Writing an algorithm require understanding of input and output. Okay. Flow charts are dash represent graphical representation. इसका आंसर हो जाएगा. Which of the following represents input output in flow chart? Inputs output and flow chart. पैरेललोग्राम जो है इनपुट आउटपुट एंड फ्लो चार्ट्स में दिख सकता है. ओके ओके like representation. ओके हाँ, इनपुट आउटपुट इन फ्लो चार्ट जिसमें पैरेललोग्राम में दिखता है. ओके the decision making symbol in flow chart is diamond shape. Okay okay processing is represented in flow chart by rectangle इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. The start and stop of flow chart are represented by the start and stop of flow chart are represented by oval shape. Okay, oval shape. Pseudocode is a method of expressive algorithm in natural language processing. Okay, advantage of pseudocode is easy to understand into programming language. Which of this is not a flowchart advantage? Takes more time to draw. Takes more time to draw is not an example of flowchart. The connected symbol in flowchart is represented by circle. सर्कल द कनेक्टेड सिंबल जो है सर्कल से रिप्रेजेंट होता है. ओके 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 सर्कल या एरो. इसका आंसर गलत है, ये गलत आंसर है. इसका आंसर एरो होगा. कनेक्टर सिंबल इन फ्लो चार्ट. ओके तो एक बार देख लेना इसका आंसर से एरो होना चाहिए. फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड बोथ रिप्रेजेंट एल्गोरिथम. ओके एल्गोरिथम. Sequence structures means instructions are executed step by step. Okay. In selection structure, decisions are made using conditions. Decisions are made using conditions. Which of these is a selection structure? Which of this is selection structure? If and else is the selection structure. Okay. Iteration structure is also known as looping. Looping. Which of this which of the following is not an iteration statement? If and else. If and else. Okay. Because this is a conditional statement. Okay और बाकी सब जो है लूपिंग का स्टेटमेंट मतलब लूपिंग का स्टेटमेंट है. ओके ड्राई रनिंग एन एल्गोरिथम मीन्स ओके executing it on pen and paper manually. Okay okay nested loop means one loop inside another. Okay ये इसका आंसर हो जाएगा. The term flow of control means order of executions of instructions. Order of executions of instruction. Okay if else belongs to conditional yeah selection. Okay selection control. Okay selection control. Repeated execution of statements until condition is false is called. इसका आंसर इटरेशन हो जाएगा. ट्राई रन ऑफ एल्गोरिथम इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग करेक्टनेस. ओके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी measures memory required. Time complexity is measured in terms of time. CPU time. An efficient algorithm should be less time and less memory. Okay इसका आंसर ये हो जाएगा. Two algorithms can be compared on the basis of time and space complexity. A correctness algorithm always produce desired output. Okay next जो है which is more important in competitive exam? Efficiency of algorithm. Okay to ensure program is bug free and correct. Debugging deals with syntax and logic error. Maintenance include updating software after delivery. An algorithm should have a clear specified both input and output. The effective of an algorithm means each step is basic and can be carried out. Okay. A finite algorithm
सॉरी, अभी जस्ट उठा ही हूँ, दैट्स व्हाई इतना या वो हो रहा है, हैप्पी आ रहा है। फाइनाइट एल्गोरिथम गारंटीज दैट dash it will stop after certain number of steps. Okay, an algorithm of arithmetic operations like addition are considered basic. Okay, E- Euclid algorithm is used for GCD. Okay, the LCM of two number can be found using formula. ओके, यूजिंग फार्मूला यहाँ पे एल सी एम जी डी इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। एंड एल्गोरिथम रिटर्न फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन must uses iteration or recursion. Which of the following problem cannot be solved using algorithm? Which of the undefined problem? The steps of dry run an algorithm helps in detecting logical error. A deterministic algorithm means same input always gives same output. Okay, same input always gives same output. Pseudocode is closer to both natural language programming and programming language. Okay, which of this is not a pseudocode? Okay, circle is not a pseudocode. In pseudocode, the word end if represent termination of the if termination। ओके, ये वाला आंसर हो जाएगा। इंडेंटेशन और इन pseudocode is used for indentation is clarity and readability। ओके, नेक्स्ट है pseudocode does not use flowchart symbol। flowchart symbol pseudocode यूज नहीं करता है। ओके, advantages of pseudocode over natural language, it is more structured। Okay, which of the following is correct pseudocode for printing 1 to 10? Okay, printing 1 to 10 is for I equals to 1 to 10, print I into 4. Okay. Pseudocode uses dash to denote repetition। Okay, for repetition pseudocode represent 4 while loop। Okay, which of this is not true about pseudocode? Okay, requires computer। Pseudocode for factorial uses, okay, 4 and y. Flowcharts are best suited for visualizing algorithm. Okay, which of this is not a flowchart symbol? Which of this is not a flowchart symbol? Triangle is not a flowchart symbol. Flowchart should be drawn from left to right, top to bottom. Okay, connector in connector in flowchart are useful when diagram does not fit in one page। Okay. Which symbol is used for decision in flowchart? Diamond। Diamond is used for decision in flowchart. Which symbol is used for processing? Rectangle। Which symbol is used for start and stop? Oval। Which symbol is used for input output? Input output के लिए parallelogram होगा। Flowchart can be disadvantageous because they take more space and time, are easy to interpret, more are graphical, more take more space and time. Okay, which of these is not a limitation of flowchart? Okay, not difficult to modify, easy to communicate. Yes, easy to communicate. The three types of control structure are sequence, selection, iteration. Default control structure is sequence. The if-else structure represents selection. A loop that never terminates is called infinite loop. Which of the following is an entry control loop? Entry control loop, while loop. Okay. Which of the following is an exit control loop? Exit control do while loop. Okay. Which of this is a definite
loop, okay, for loop, okay. Which of the following, which of this is a indefinite loop? Both do, both C, A and B, okay, ये do while and do while. A nested loop is, a nested loop is one another inside, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम में, okay. Selection structure is called decision making, okay. Debugging finds and remove errors. Syntax error caused by wrong grammar in code. Okay. Logical error caused by wrong thinking in algorithm. Very good. ये होगा आंसर. Okay. Runtime error occur when program is running. Okay. Testing ensure that program produce correct result. Okay. इसका आंसर ये हो जाएगा. Maintenance include adding new feature after delivery. Which of these is not a type of error? Flowchart error. Flowchart error is not a type of error. Debugging is usually done usually done during development. Okay. Okay. Which of the following helps in manual verification of logic? Dry run. मैनुअली अगर बात किया जाए तो ड्राई रन होगा. ओके, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा. उससे पहले मैं बता दूं कि आपको ये पीडीएफ्स 10 रुपये में मिलेंगे. ओके. एंड हमारे पास बहुत सारे पीडीएफ लाइक है, हाँ, चैप्टर वाइज पीडीएफ है सारे एनसीईआरटी का. एंड हमने लाइक लगभग एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड किए, अराउंड 300. ओके. तो आप इस पीडीएफ को पाने के लिए और इतना करके जाओगे तो आपका स्टेट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. एंड आपका बीपीएससी का 50 to 70% सिलेबस जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा. ओके. तो आप क्या करो, ये पीडीएफ ले लो एक बार. एंड पीडीएफ लो या ना लो, पीडीएफ का प्राइस रखने का आपको मोटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग 10 रुपये दोगे तो आप इस पीडीएफ को सीरियस लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे. ओके. नहीं तो आपको फ्री में कोई भी चीज़ दे दिया जाता है तो आप वो सीरियस नहीं लेते हो. ओके. तो यहाँ तक आ गए हो तो पीडीएफ ज़रूर परचेज कर लेना, नहीं तो आप हमें सुपर चैट कर सकते हो. ओके. एंड हम वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे. ओके. तो नेक्स्ट जो है, अ बग इज़ एन एरर इन प्रोग्राम. ओके. तो ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था और नेक्स्ट जो है हम कल से करेंगे 101 से. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.